हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैंने आपको बताया था लगभग डेली 2 वीडियो में 9 पेज का एक समरी बनाई थी। इनकी जो फंड थ्योरी थी उसको ध्वस्त करते हुए इन्होंने जो नंगा नाच किया फंड थ्योरी के नाम पर और एक अच्छा खासा रेगुलेशन इम्प्लीमेंट होने से रोका। अब क्योंकि केस की सुनवाई होने वाली है और इनकी जो फंड थ्योरी की कहीं ये इनकी कहानियां बुनी जा रही होंगी, उन थ्योरियों को ध्वस्त करने के लिए सोशल मीडिया में हम इतना मैटर डाल देंगे कि इनकी हिम्मत नहीं हो ये किसी प्रकार से फंड थ्योरी को लाएं। क्योंकि हमारे रेगुलेशन में और एक्ट 1970 में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हम सीपीएफ के बदले पेंशन लेंगे और हमारा जो अपडेशन है या पेंशन है वो फंड पर आधारित होगा। पहले रेगुलेशन बनता है, अधिकार क्रिएट किया जाता है, पहले फंड की बातें नहीं की जाती हैं। पहले अधिकार क्रिएट किया गया 35 में, उसके बाद फंड कहाँ से अरेंज होगा, ये जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो एग्जीक्यूटिव है, उसका काम है उसकी व्यवस्था करना। अब मेरे सामने रमेश भटेजा जी, उन्होंने एक लेख डाला है और इन्होंने लिखते रहते हैं। क्योंकि मैं सारे यदि वीडियो फंड थ्योरी के डालता रहूँगा तो हो सकता है थोड़ा बोर हो जाओ, तो 2 मैंने वीडियो डाले, उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन एडवोकेट कमल पाटनी जी ने की। और ये वीडियो भटेजा जी कहते हैं कि अकेले हम आईबीए और यूएफबीओ को दोष न दे करके हम भारत सरकार को दोष देना चाहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्निंग बॉडी वो है, रेगुलेटिंग बॉडी सबकी वो है और हम हैं उसके सिटीजन इस देश के, और संविधान की रक्षा करना भारत सरकार का काम है। वो ये कहते हैं हमारा पेंशन अपडेशन केवल और केवल भारत सरकार की मर्जी के बिना नहीं हो रहा है, भारत सरकार नहीं कर रही है। तो दोस्तों आज मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या करते हैं वो। डियर पेंशनर फ्रेंड्स, these days some activists are blaming that working employees unions are the real culprit in creating hurdle in our disputed issues during negotiation in BPS, whereas others say the IBA is playing a foul play. My dear friends, I wish to disclose the fact that government is the real game player, but it is difficult to explain the reason. This is hard truth that UFBU have never argued in pensioner favor during BPS, when the IBA or UFBU proposed that a special allowance should be introduced which attracts DA but not counted for superannuation benefit. They proposed and agreed to change base year of DA from 1960 to 2016 for all employees and not for those retirees who retired after November 2022. The 80-88 point DA were merged in basic pay, working employees, and for those pensioners who retired after November 2022 but not for those pre-2022. Perhaps nobody, including me, will understand the logic behind such discriminatory agreements. But one thing is clear, that in these heinous acts, both IBA and unions were conspirators. Obviously, when our own youngsters stand against us, we become helpless. The surprising fact is that IBA agreed for these agreements in spite of knowing that these are in consonance with BEPR 995 and some verdicts of Supreme Court in other cases. I am bound to think that bank managements are behind all this game. Now, question rises whether bank MDs or CEOs have any courage to sign such illegal agreements. Yes, they may sign because finance ministry is behind them. I will give some solid evidence to my contention that government is no way less responsible for all the injustice being done to bank retired employees. I would like to quote MC Sangla, lying pending half heard and waiting for justice. The and opposite parties contesting against us are PNB, bank management, IBA and central government. We can understand the intention of management because they in general, as per our experience, stand against the rights of working or retired employees, maybe on flimsy grounds. But the center government, which is government for all, whether the petitioners or respondents, it is expected that they will work to save the rights of public pensioners vested in the Constitution of India, which are mainly mentioned Article 14 and 21. The slogan of the present government that Sabka Saath Sabka Vikash proves to be false and only
boat catcher. Had the government a little care that bank retired employees are also the legal residents of this country, sacrifice their life for the uplift of the economy of the country by implementing several schemes of government in the direction of eradication of poverty, and they will all now in their old age fighting in courts. The government had strictly directed IBA to do justice with retired employees, but government is impartial, giving all benefit to the central government and employee, but not to us. The government has sent Attorney General to use all tactics to delay and deny our justified rights and detracting the case continuously. Same to you, UFBU. धिक्कार है UFBU और IBA और भारत सरकार. रमेश भटेजा, सो द बिग. दोस्तों, रमेश भटेजा जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक चित्रण कर दिया उस चीज़ का जो वास्तव हमारे सामने हो रही है, और मैं इनका ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अपने आप में ही उनका सब कुछ एक्सप्लेनेटरी है. तो आप इसको देख सकते हो और उसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा. थैंक यू, धन्यवाद.